Good evening, everyone. This is Mitesh Pradhan from My Colors India, and today we'll be learning Color Wheel. Thank you so much for joining this channel, and today we'll be learning that how we can make a color wheel. Okay, so like all those who have joined here, I request you that if you are there with your material, you can just join us. Some students are still joining, so we'll just wait. All right, so fine. So we can start now. We already mentioned that we'll be joining from My Colors Design, but we are joining from My Colors India. And you can see the color wheel here, and we'll be learning the basic properties of color wheel and how can we make this color wheel. So the basic concept to understand the color wheel is the division line. When I say the division line, that means on the left hand side there's a different division, and on the right hand side there's a different division. Okay, so you can just mark these points as a 12 o'clock, 6 o'clock, 3 o'clock and 9 o'clock. These are the points which you can see here, right? And when we mark all these points, you should understand that this must be 11 o'clock. So the first marking we'll be taking is 11 o'clock and 12 o'clock. So our first color which is going to take place is Y, that is yellow, which is between 11 o'clock and 12 o'clock. Then what you have to do is you have to leave 3 gaps. Gap 1, gap 2, gap 3. Okay, when you leave 3 gaps, on the 4th gap, there will be a second primary color, which is between 3 o'clock and 4 o'clock. That is blue. That is blue, right? Moving forward, these are the primary colors which are marking. Yellow is a primary color, blue is a primary color, and red is a primary color. Moving forward, again I'm going to leave 3 gaps. Gap 1, gap 2, gap 3. Now the 4th box will be our 4th primary color, that is red. So this is 6 o'clock, 7 o'clock. So between 7 o'clock and 8 o'clock, a color will come here which is red. So now you can see that we have already divided the color wheel into these parts, right? Moving further, you should understand I have left 3 gaps, right? Gap 1, gap 2, gap 3. So this gap will be the combination of yellow and blue. That means yellow is going to contribute 50% of yellow and blue is going to contribute 50% of blue. And that's how you will see that we'll be getting a color called yellow plus blue. We will be getting here green. Okay, we'll be getting here green. So which is a secondary color. Okay, primary colors are the colors which are from the beginning. They are the basic color which cannot be made. Secondary colors are made with the help of 2 primary colors. Okay. Now moving on this side, you can see there's a gap between blue and red. So there's a center gap here. That means when I mix red and blue, I'll be getting a color here which is known as violet. Yes, it will be known as violet. Some of you must be thinking कि वो तो purple होता है. नहीं, वो purple नहीं होता है. Purple और violet में difference होता है, जो कि मैं आगे जाके आपको बताने वाला हूँ. And if you see this, there is another gap here which is between yellow and red, right? So when we mix yellow and red, that means equal quantity of yellow and equal quantity of red, will be getting our another secondary color which is orange. Right? So right now we are just marking it. Now watch, what are the colors? We have got primary colors, that is yellow, blue, red. We have got our secondary colors which are orange, green and violet. Now what about these colors, right? These colors, some of you must be thinking that these colors are known as tertiary colors, which is wrong. These are not tertiary colors. These colors are known as intermediate colors because they are between yellow and green.
Okay, they are between one primary colors and one secondary colors. So they are known as intermediate colors. टर्शियरी कलर्स का जो डेफिनेशन होता है वो काफ़ी लोगों ने गलत समझा है एंड गलत बताते हैं, गलत पढ़ाते हैं. वो लोग बोलते हैं कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी को मिला के टर्शियरी बनता है. नहीं, जब हम दो सेकेंडरी कलर्स को मिलाते हैं तो उसके बाद जाके हमें टर्शियरी कलर्स मिलते हैं, राइट? तो अब अगर आप मुझसे पूछेंगे टर्शियरी कलर्स कैसे मिलते हैं, तो इफ आई से यू ऑरेंज और ग्रीन को जब आप मिक्स कर देंगे तो यूल गेट अ कलर कॉल्ड सिट्रॉन which is yellowish gray. When you mix orange and violet, you'll get a color called russet, which is reddish gray. And when I mix the last color, that is green and violet, I'll be getting a color called buff, which is bluish gray. Okay, which is bluish gray. So just make sure कि आप जो भी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, लाइक इंटरनेट से या यूट्यूब से या गूगल से, आप जहां से भी देख रहे हैं, आप अगर कोई टर्म्स का नाम लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उनका मीनिंग क्या है. प्राइमरी का मतलब होता है फर्स्ट इन ऑर्डर, सेकेंडरी का मतलब होता है सेकेंड इन ऑर्डर, टर्शियरी का मतलब होता है थर्ड इन ऑर्डर, क्वाड्रिनरी का मतलब होता है क्वाड मीन्स फोर, विच इज फोर्थ इन ऑर्डर, एंड दिस इज इंटरमीडिएट कलर. नाउ हाउ टू नेम इंटरमीडिएट कलर? काफी लोगों को लगता है कि हम इंटरमीडिएट नेम्स का कैसे नाम रखें. चलो इसको मिला दिया, इंटरमीडिएट बन गया, राइट? लेकिन क्या आपने सोचा कि इसका नामकरण कैसे करें हम, राइट? ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन आई से प्राइमरी तो प्राइमरी हमेशा पहले आना चाहिए, व्हेन आई से सेकेंडरी तो सेकेंडरी का नाम उसके बाद में आना चाहिए. तो अगर मुझसे किसी ने पूछा कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम होगा येलो ग्रीन. इफ समवन आस्क मी इसका नाम क्या होगा, तो ये इन दोनों के बीच में है, तो विच इज ब्लू ग्रीन. सेकेंडरी का नाम कभी भी पहले नहीं रखा जाता है, सबसे पहले प्राइमरी का नाम, विच इज ब्लू ग्रीन. इफ आई आस्क यू दिस फॉर दिस वन, नाउ यू विल बी एबल टू नेम इट योर सेल्फ, विच इज ब्लू वायलेट. इफ यू सी दिस वन, दिस इज नोन एज red violet. If you see this one, yellow is in first order, so this will be yellow orange. If you see this one, ये दो प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बीच में है, तो एज आई टोल्ड यू कि प्राइमरी का नाम पहले आता है, सेकेंडरी का उसके बाद में आता है. सो द नेम फॉर दिस इज रेड ऑरेंज. नाउ यू ऑल कैन सी दैट वी हैव प्लेस्ड ऑल द नेम्स सक्सेसफुली. एंड अब हमारे जो क्लॉक का जो बोलते हैं ना, जो पर्पस है, इट्स फुलफिल्ड. सो इफ यू वांट टू कीप इट, यू कैन कीप इट फॉर योरसेल्फ. इफ यू वांट टू इरेज इट, यू कैन इरेज इट. मूविंग फर्दर, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट हाउ what are the colors we'll be using for this particular drawing. Today we just need a water container here. We need a brush. We need C18, which is of Camlin, and I'm using a My Color sketchbook. And watch this. This demonstration is very important. So you just need to see this much part of the color palette, because I'll be using Gamboge hue, which is known as yellow. Yellow is the name of hue. Okay, I'm going to use cobalt blue, and I'm going to use crimson. Okay, why crimson? Some of you must be thinking why we are going to use crimson. Remember that in C18 light red is already there. Okay, light red is already there, but light red is a natural red which is not that vibrant. It's not that vibrant. So that is one of the reason I'll avoid to use light red, and I'll be using crimson. And the other purpose is, some of you who is having question that कि सर वॉयलेट में एंड पर्पल में डिफरेंस क्या होता है, वो डिफरेंस आपको तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आप क्रिम्सन कलर का इस्तेमाल ना करें. मूविंग फर्दर, वेरी क्विकली आई एम गोइंग टू प्लेस द कलर्स. दिस इज Gamboge hue. Some of you don't have Gamboge hue, so what you can do is simply you can use Indian yellow or chrome yellow, and I'm not going to put it completely. मैं बहुत लिमिटेड एरिया लेने वाला हूँ इसको कलर्स को लगाने के लिए. ओके, लेट मी पुट इट कम्प्लीटली, बिकॉज अदरवाइज सम ऑफ यू विल जस्ट पुट इट हाफ एंड यू विल बी लाइक कि सर आपने तो इतना ही लगाया था. सो दिस इज येलो, विच इज नोन एज Gamboge hue, my first color, which is between 11 o'clock and 12 o'clock. Moving further, remember that your brush should be clean at all point of time. And as I move forward, and you will see that I'm using cobalt blue
Cobalt blue is a metal based blue which is extracted from metals, and I'll be using it here. And do not make a very diluted colors. Make sure your colors are in high concentration. And I'm going to apply from here. And I feel like कि काफ़ी light हो गया है, तो let me make it little bit dark. We'll be learning many schemes here. The secret of color wheel. Try to just apply in one direction so that you don't get a patch. But it's fine, like watercolors में patch आना जायज़ सी बात है. But अगर patches नहीं आ रहे तो बहुत अच्छी बात है. Somewhere you have achieved something कि हाँ यार हमारे color में patches नहीं आ रहे हैं. Okay, now watch, I have applied this. And at this point of time, I'll be moving forward. I'll be using my next color, which is this is crimson. So you can see I'm washing my brush again and again, because even if a small impurity can change the entire color, remember this. Red is the highest frequency color. And why do people call red as a highest frequency based color? Because if you see the electromagnetic spectrum, you will see that जो हमें rainbow मिलता है उसमें red color सबसे first होता है. People pronounce it as a Vibgyor, लेकिन red is the highest frequency color, जो कि ROYGBIV होता है. That is the thing. So when you study about electromagnetic spectrum, you'll understand जो X-rays and ये जो दुनिया भर के rays हैं उसमें से एक particular time period आता है जहाँ पे you will see all these colors. And this experiment was done by Isaac Newton. Okay, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, काफ़ी पहले किया था उन्होंने एक्सपेरिमेंट. प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट है, एंड जहाँ पे उन्होंने ही ये बताया था कि light has all the colors. So the definition of color is it's a reflection of light. Some people try to give that color is something which we see. Okay, you see, but how do you see? Until and unless there is no light, you won't be able to see any colors, right? So that is one of the reason. Now watch, I'm done with my primary colors, and moving forward I'm going to make some secondary colors, and those secondary colors are very important for you to understand, because these secondary colors are like the combination of primary, and according to the subtractive theory which is given by Sir David Buster, who gave this color wheel. I'm not talking about the spectrum thing, okay? Spectrum was given by Isaac Newton, but the color wheel was given by Sir David Buster, who invented this thing. And he also said that secondary colors are also known as subtractive colors, because when we add two primary colors and when we get a secondary color, the intensity of secondary color is lower than the first primary colors. Okay, so moving forward, now I'm not going to take banaya green, please. I'll take this yellow here in my palette here. I'll take yellow, and I'll be taking some blue, and when I'll mix it, you'll see that I have got a green. Now some of you must be thinking कि काफ़ी light बन गया है. थोड़ा light तो हुआ है, but it's totally fine. Now I'll just show you that how can you apply this kind of color here. Just make sure that every color, now let me just concentrate the color little bit. I'm going to take this blue and green a lot, because if this color is little bit diluted, so what will happen, you will not get the actual colors to see, right? And I don't want to do that, because सारे colors एक दूसरे से related हैं. Now watch, this is the actual green which I see. तो मैं इसी colors को लेने वाला हूँ और आगे फैलाने वाला हूँ. And when I combine all this, you'll see that I've got, and now my task is कि इसमें patch ना आए, right? तो पैच ना है उसके लिए मैं क्या करूँ, आई एम गोइंग टू वाइप माई ब्रश, एंड जितने भी अनवांटेड कलर्स के बोलते हैं ना कि इसको एक सिरे से मैं स्टार्ट करूँगा, नेक्स्ट एंड तक लेके जाऊँगा,
एंड अनवांटेड कलर्स मैं उसको निकाल दूंगा. नाउ यू कैन सी दैट आई एम गोइंग टू make a next color, and this next color is going to be I'll make this because this is getting dry right now. Making of orange, I already have crimson here. All I need to do is clean my yellow. So now some of you must be thinking kaise saaf hoga. Just put some water here. You can take the cloth and when you press it, ये almost काफ़ी हद तक साफ हो जाएगा. People are always like कि सर कलर्स काफ़ी वेस्ट होते हैं क्लीन करते टाइम. So these are the methods which you can use. And I'll be making the next color, which is yellow is already here. So I just need to take a little bit yellow and mix it here. And you can see I've got an orange here. पता कलर व्हील सिर्फ देख के खुश नहीं होना है कि हाँ यार कलर व्हील आता है. When you try yourself, you'll understand कि कितने रेशियो में कलर्स को मिलाने के बाद you get orange. My color is still very watery at this point of time. But it's totally fine because at the end I'm going to remove all the unwanted water from the top. Excess colors आते हैं जिसकी वजह से it creates a pool, and I'm going to this is like just move it. मुझे पैचेस नहीं पसंद है, आ जाते हैं कभी कभार. एंड लेट मी टेल यू कि लाइट कलर्स में पैचेस कम आते हैं, डार्क कलर में पैचेस ज़्यादा आते हैं. ओके, दिस मच इज़ फाइन फॉर नाउ. मूविंग फर्दर, द वॉयलेट. यस, ना काफ़ी लोग को लग रहा होगा कि सर क्रिम्जन यूज़ करके कौन सा वॉयलेट बनता है. तो लेट मी जस्ट शो यू दैट हाउ कैन आई यूज़ इट. आई विल बी टेकिंग क्रिम्जन अगेन here, and blue is already existing here. When I mix it, I'm getting a violet here, blue and violet. When you add equal amount of blue and violet, you'll get blue and crimson, you'll get blue violet. See, इतना dark आपको मिल सकता है. And I'll not fill it entirely because I also want to show you कि अगर आपने उसके जगह पे light red use किया होता तो आपको क्या result मिलता है, right? So you can see the difference. Here, and I'm left the remaining area to use light red. Yes, because in C18 we get a light red, and this light red is something which is little bit dull because it is extracted from the earth, and some people also call it natural red, but I don't like it. Yeah, like अगर आप stone का texture and all आप ये सब बनाते हैं तो for that case it's good. Now watch, I'll take blue here. थोड़ा सा blue लिया मैंने and हल्का से ही लूँगा because I don't want to spend a lot of time. And this is red, light red, C18 में जो आता है. अब ये violet मुझे मिला है and I just want to show you remaining area में. ये देखिए violet है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा वॉयलेट नहीं है, बट इट्स अ ग्रे वॉयलेट विच इज़ वेरी डल, एंड आई एम कीपिंग अ लिटिल बिट गैप बिटवीन बोथ द कलर्स विच इज़ लाइक दिस. देखिए दोनों के बीच में आपको डिफरेंस दिखेगा. ओके, वॉयलेट के ही कैटेगरीज हैं बट इट्स लेट हियर. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, if you see the remaining ones, now for the remaining ones काफ़ी लोग को लग रहा होगा कि सर येलो एंड ग्रीन मिलाया और बन गया. नहीं, if you go that way, that means you are depending on a secondary color. I want you to teach कि can we use two primary colors to get this thing directly. So there is a derivation, there is a small formula which I want to show you here. Now let's say I want to make this yellow green. Okay, so I'll just write yellow green here, yellow green. Okay,
दैट मीन्स येलो को मैं कैटेगराइज कर लेता हूं दो हिस्से में. माई फर्स्ट पार्ट विल बी, यू कैन से 50% ऑफ येलो एंड द सेकेंड पार्ट विल बी 50% ऑफ येलो. चलो ग्रीन को मैं कैटेगराइज कर लेता हूं वापस दो हिस्से में. ग्रीन वॉज मेड बाय 50% ऑफ येलो एंड इट वॉज मेड विथ 50% ऑफ ब्लू. सो नाउ इफ यू सी, मेरे पास यहां पे कितने येलोज हैं? एक येलो, दो येलो, तीन येलो, राइट? सो यू कैन ऑल्सो से कि 3 drops of yellow plus 1 drop of blue will give you yellow green. ये कहना सही रहेगा सिंपल लैंग्वेज में. एंड ये भी कहना सही होगा 50-50-50, दैट इज 150 विच इज येलो प्लस ब्लू इज ओनली 50. ओके, so when I cut this, this is like 3 yellow plus 1 blue will also give you yellow green. Okay, पहला तरीका होगा ये समझने के लिए कि you can get us intermediate colors directly. अगर ये concept, I'm going to post the image, so not to worry at all. Now watch, I want you to understand, ये पहला तरीका था. दूसरा तरीका था बनाने के लिए, when you see a color, it's between two primary colors. It's between two primary colors, right? It's between yellow and blue. तो आपको ये देखना है कि ये कलर कौन से कलर्स के पास ज्यादा है. ये येलो के पास ज्यादा है. दैट मीन्स यू कैन ऑल्सो से मोर ऑफ येलो एंड किससे दूर है? ब्लू. यू कैन से लेस ऑफ ब्लू. दैट मीन्स व्हेन आई यूज मोर ऑफ येलो एंड लेस ऑफ ब्लू, आई कैन गेट दिस कलर. सेम तरीके से when I have to make this color, more of blue, less of yellow will give me this color. Okay, so now let's make this color very quickly, and so that we can just move forward and finish all the tasks which we have decided for today. So I'm going to make this color very quickly. For that I need to clean my palette, so just give me a minute. I'll be ready. And it's very important to keep your palette clean, otherwise you'll try to make color wheel and you'll be getting a different result. It happens a lot, so you need to be very careful about your palette management. Now watch, let's say कि यहाँ पे ऑलरेडी ग्रीन है, राइट? चलो मैं पहले आपको नॉर्मली बना के दिखाता हूँ कि दिस इज माई येलो का एरिया. हल्का सा येलो लिया मैंने, मीन्स 3 ड्रॉप्स के आसपास, मीन्स यू नो मोर ऑफ येलो सीधी भाषा में. एंड आई हैव टेकन लिटिल बिट ग्रीन एंड आई विल मिक्स थोड़ा सा और येलो एंड यू विल सी आई गॉट अ कलर हियर एंड दिस कलर इज लाइक अ वेरी लाइट ग्रीन. एंड इफ यू सी दिस, इफ आई अप्लाई हियर, you'll understand the difference between both the colors. Both the colors which are here. ये देखिए, अब इसमें आपको देख के ही लग रहा है कि येलो की क्वांटिटी ज़्यादा है. एंड कैन यू इमेजिन, ये दो, एक प्राइमरी और एक दोनों प्राइमरी कलर्स की कॉम्बिनेशन से वी वर एबल टू अचीव दिस रिजल्ट, राइट? सेम तरीके से इफ समवन से इसकी कि सर अब इसी कलर को कैन यू टेक इट टू दिस वन, बिल्कुल ले जा सकता हूँ. येलो अभी ज़्यादा है, राइट? यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे को ब्लू की क्वांटिटी इसमें बढ़ा देनी है. जब मैंने इसमें ब्लू की क्वांटिटी बढ़ा दी तो यू सी दिस, मुझे कलर यहाँ मिल गया एंड दिस कलर इज नोन एज ब्लू ग्रीन. थोड़ा सा और डार्क जा सकता हूँ मैं, लाइक अ काइंड ऑफ पिकॉक काइंड ऑफ कलर विच यू सी हियर. Make sure you mix the colors whenever you use C18, because C18 में कलर्स जो रहते हैं, बिकॉज ऑफ द पिगमेंट रेशियो क्या होता है कि वो कलर्स अपने आप को अब थोड़ी देर में सेपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं. ओके,
कुछ लोग इसको भी ब्लू ग्रीन बोलते हैं, और अगर इसमें मैंने और भी ब्लू बढ़ा दिया तो दैट विल बी ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन, क्योंकि इसमें ब्लू की क्वांटिटी ज़्यादा है। ओके, तो ब्लू की क्वांटिटी जब उसमें ज़्यादा आती है तो यू कैन सिंपली टेक इट एंड अप्लाई हियर, एंड आई एम डन विद माई दिस कलर। Our next session will be based on types of colors which can be made with by using the same color wheel. So make sure by the time we are starting our next live, you're done with your at least these experiments. Moving forward, you can see blue violet and अब आपको पता है कि ऑलरेडी वॉयलेट है यहाँ पे, राइट? तो जब आपके पास यहाँ वॉयलेट है दोनों जगह पे, दैट मीन्स अगर मैंने इसमें ब्लू मिला दिया तो मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, और इसी में अगर मैंने रेड मिलाया तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा, राइट? तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। सो आई विल टेक दिस, आई विल टेक ब्लू ओनली एंड आई विल ऐड हियर, एंड दिस इज द कलर, यू नो, जो इंक पेन का पहले कलर आता था ना, चल पार्क इंक का जो कलर्स आते थे ब्लू वॉयलेट, थोड़ा सा उस टाइप का ही है। यू नो, यू कैन से जो कपड़े ब्लू करने वाले जो कलर्स आते हैं, राइट? इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ कलर। ना सम ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग सर आप पर्पल कब बताएंगे? गाइज लेट मी टेल यू, पर्पल का जो बेसिक कलर है वो ब्लू वायलेट ही है। when I add white to this color, I get blue violet, I get purple. I'll show you just outside this image. ये आपके पास ब्लू वायलेट आ गया है अभी, ओके। एंड इसी कलर में, लेट मी नॉट स्पॉइल राइट नाउ, मैं ये कलर्स दोबारा बना के यहाँ बाहर आपको पर्पल दिखा दूंगा कैसा दिखता है। एंड इन द सेम कलर इफ आई ऐड सम क्रिम्सन, like this is a crimson color, so you'll see that what kind of colors I'll be getting here. Sorry, see I'm adding crimson, so this color is known as red violet. Red violet because you know इसमें red की quantity काफ़ी ज़्यादा है, तो this will look something like this. डिफरेंट है ये कलर थोड़ा सा अपने आप में। जिसको कलर व्हील समझ में आ गया वो दुनिया का कोई भी कलर्स देख के रिकग्नाइज कर सकता है। कलर परसेप्शन को लेके वी आर गोइंग टू ब्रिंग अ सीरीज वेरी सून, जहाँ पे आप किस तरह कलर्स को देख के वो कलर सेम कलर्स आप बना सकते हैं। विल बी टीचिंग यू दैट। नाउ वॉच, आई हैव गॉट दिस रेड वॉयलेट हियर विच लुक्स मोर ऑफ क्रिम्सन एंड लेस ऑफ दिस, राइट? मूविंग फर्दर, I already have this orange here, right? And I don't want to waste this color here. तो मैं क्या करूँगा? I'll be adding some yellow to it. So before that I need to clean yellow. So just give me some time. I'll just watch this. I'll take this cloth and clean it very quickly. It's done. Now watch. Always make sure your water is clean. Now some of you must be thinking, sir, अब तक तो आपका पानी गंदा हो चुका होगा। नहीं, मेरा पानी अभी भी clean है because I use a quick dip method to make sure that my water is long lasting, right? Clean रहता है। I'll teach you that how you can do that at the end. Now watch, this is yellow and I'll be adding to this one. Orange था, right? तो मैंने उसमें yellow मिलाया, तो ये मेरा पहुंच गया थोड़ा सा येलो ऑरेंज टाइप में। तो लेट मी ट्राई। ओके, यस, इट लुक्स द सेम। ओके, थोड़ा सा क्रिम्सन मैं बढ़ा देता हूं इसमें, हल्का सा। ओके, अप्लाइंग द कलर सॉफ्टली। All those who are making with me, you all can post it and tag us. We'll post your work as a story.
Now watch, adding more crimson to it. My crimson is spoiled because I made this particular color. So first let me clean this crimson. Crimson easily clean हो जाता है because उसका like color अभी थोड़ा सा it's hard, so upper layer से मुझे सिर्फ color निकालना होता है. Taking more crimson here and adding to this color. मेरे को yellow कम पड़ गया, so I'll just take some more yellow. This is yellow and crimson. Crimson की quantity ज़्यादा. And some people may call it red, but it's not red because presence of crimson is high here. So this technique which you see, by which we were able to make a color wheel. And if you divide this color wheel on left side and right side, which I was talking in the beginning, you'll simply understand the right side of the color wheel are the cool colors and the left side of the color wheel are the warm colors. Okay, like right side and left side. You can see कि मेरा color wheel अब ready हो चुका है. अब मैं कुछ basic colors के बारे में आपको बताने वाला हूँ. Okay, the first thing is you wanted to know about the dip method, right? So I'll just show you. अब ये मेरा पानी है. Okay, and this is the cloth which I'm using right now, which is spoiled. So what do? You don't wash it immediately. You just dip it and bring it out. Dip it and bring it out. Dip it and bring it out. This way. So you need to have a cloth where you can wipe it. And this is how, without changing the water again and again. Now watch, I'm washing my brush. The color of the water remains the same, right? So you can see I made so many colors without changing the water at one go I was able to make it. So this is known as the color wheel, which was given by Sir David Buster. He also called it as a pigment theory. And now let's learn about some color schemes here. So if you can write it somewhere, it will be good. But we are going to bring a video on it. Now watch. On the right side, it's known as cool colors. You can say from 12 o'clock to 6 o'clock, moving from right side. And on the left side, it's warm colors, from 12 o'clock to 6 o'clock, but the left side, right? Now, some of you must be thinking, sir, ये complementary colors क्या होते हैं? Complementary colors are also known as the opposite colors, or we also call it contrast colors. Like for example, the complementary color of yellow is violet, right? And the opposite of green is red. So ये सारे complementary colors होते हैं, opposite वाले, ये complementary colors, okay? Now some of you must be thinking about the purple वाला part, कि sir purple क्या होता है? Now let me to explain you purple. What I have to do is I'll make blue violet first. Now you can see I'm making blue violet. पहले मैं कलर के बाहर आपको लगा के दिखाऊंगा. Right now it's violet. Now it's converting towards blue violet. First I'll put a patch and I'll check whether it's the same color or not. Yes, it's the same color. Now this is blue violet. And the moment I add white to this color, we get purple. Okay. So you can see I'm taking some white. It will take some time to get dilute. But let me just take it little bit, and I'm going to use a corner of this. And now watch, मैंने थोड़ा सा corner area use किया, and when I apply this, you will see I've got a shade of purple, right? Not that vibrant because it's a pigment based colors, and as I told you that they are the subtractive theory. Fine. Let's move forward towards the other color schemes. As I told you, this is complementary color scheme. The second word is known as split complementary. When a word split is used, that means, okay, what happens? This is violet here. Violet ka split complementary is not taking the yellow, making a Y like this. So you can see this is known as split complementary. Okay, that means violet का split complementary color कौन से है? Yellow, orange and
yellow green, you need to leave white. Okay, because the color is splitting, right? तो split complementary, नाम याद रखोगे सब याद रहेगा. Now there is a word called double complementary. Double complementary जायज़ है, जो word है double complementary means एक complementary scheme था उसके साथ एक और आ गया है. That means yellow violet and yellow green and red violet. ये कहीं भी rotate हो सकता है. Like whatever schemes I'm telling you, it's not restricted to a particular angle which I'm teaching you. This is double complementary. Now there is another scheme which is known as double split complementary. तो डबल कॉम्प्लीमेंट्री में स्प्लिट वर्ड यूज हुआ है तो बस ये स्प्लिट हो जाएगा. दैट मीन्स देर विल बी अ गैप बिटवीन द कलर्स. सो दिस इज नोन एज डबल स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक अ कलर हियर, दिस इज डबल कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन द मोमेंट आई एड अ वर्ड कॉल्ड डबल स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, सो इट स्प्लिट्स और बीच में गैप आ जाता है, विच इज नोन एज डबल स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री. हाँ जी, चारों ही कलर उस कॉम्बिनेशन में आते हैं. नाउ देर इज अ कलर कॉल्ड ट्रायड कलर. ट्रायड कलर क्या होते हैं? व्हेन देर इज अ ट्रायंगल, व्हेन अ ट्रायंगल इज क्रिएटेड, वॉच, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है विद द एंगल ऑफ 60 डिग्री विच इज इनसाइड, वी कॉल इट ट्रायड कलर. ट्रायड कलर ये इसी एंगल में होता है, ये कहीं भी रोटेट हो सकते हैं. कहीं भी आप रोटेट करोगे, बस ये एक ट्रायंगल होना चाहिए जो कि आप देखोगे प्रॉपर तरीके से. अगर आपने इसको रोटेट किया, इट विल वर्क. तो दिस इज नोन एज ट्रायड कलर स्कीम. ओके, the second one is known as now the next one is known as analogous color scheme. Analogous color scheme होता है, you can take this color and this color. That means when you choose 3 colors back to back or continuously, it becomes a analogous color scheme. ज़रूरी नहीं सिर्फ ये हो, अगर इस चीज़ को उठा के मैंने यहाँ रख दिया तो it is still a analogous color scheme. लेकिन अगर इसको मैंने बीच से निकाल के कहीं और रख दिया तो it is not analogous color scheme. ओके, सो इट नीड्स टू बी अ कंटिन्यूस फॉर्म. अगर वो वॉयलेट से स्टार्ट होता है तो वो या तो ऐसे कलर एनालॉगस बनेगा या तो ऐसे एनालॉगस बनेगा. ओके, दिस इज नोन एज एनालॉगस कलर स्कीम. मूविंग फॉरवर्ड, राइट साइड के जितने कलर्स आपको दिख रहे हैं, वी कॉल इट कूल कलर्स. ओके, सारे कलर्स लाइक येलो ग्रीन, ग्रीन, blue, violet, and all the colors which are on the left side, it is known as warm color scheme. Okay, ये warm है. तो जब किसी को अभी कभी कभार आपको पेंटिंग बनाने का मन करता है, and if you want to show rainy season or something cloudy या तो cool मौसम दिखाना आपको, तो they use most of the color schemes from here. But if you want to show something different like desert base या something, तो they use warm color scheme. Okay, moving forward, now there are 2 more schemes which are added here, which we'll be learning later, but I'll still tell you. The first kind is achromatic color scheme. Achromatic बोलते हैं हम उसको. Achromatic means जो हम आजकल filters लगा के black and white photo खींचते हैं, we call it achromatic. Anything which is black and white, it's known as achromatic color scheme. And जब भी आप, the last color scheme is whenever you choose any one color, कोई भी एक color आपने लिया, and if you make, you add white or you add black or you add gray, जब आप उनको मिला के जो कलर स्कीम्स बनाते हैं, it's called monochromatic color scheme. We call it monochromatic color scheme. Okay, so this was just the first day based on the color wheel, and there are a lot of series which I'm going to launch, and everything is going to be live. So you must follow My Colors India and My Colors Design to get access to all these videos. And right now, you can say giveaway is going on from My Colors India, where we are giving Camlin material and we are supplying it. We are giving it for free. Yes, like you need to tag and you need to share it. The more you can do it, right? So that's it. This is Mitesh Pradhan from My Colors India. Thank you so much for joining.